Welcome to all of you who are joining this planet for one aim, how to follow holy science. The holy science, in the opening introduction, it is given, our aim is one, how to maintain our existence. Why we have this aim? It must be this is our nature. If our nature is eternal, then we have only one aim, how to maintain our existence. But our nature is also to know everything, creation, preservation, and change according to need. That is our nature. Therefore, we are trying to experience consciousness. And our nature is each and every moment to manifest in the form of a new beauty. It is only possible when we accept every moment change. When we accept every moment change, then from seed to the sprout, from a sprout to a small plant will start growing. One day this plant will be tree. Then from seed up to the tree, how many changes we feel? Countless. And every day there is a fall. You will find some leaves are falling, new leaves are coming out. Some petals are falling down, new petals are coming. It gives presence of ever new beauty. Therefore, our aim is to maintain our existence. We have to practice Kriyayoga. We are very fortunate that Kriyayoga is the perfect teaching given by deathless Mahatma Babaji. When you practice Kriyayoga, automatically you will realize we experience that our existence is eternal. We experience that our existence is one with the omniscient. Omniscient means complete unit of knowledge. Then we realize our existence is bliss, ever new joy. By practicing one, we get all. But when we practice one, if I am musician, doesn't matter. I can practice Kriya Yoga along with my music. If I am farmer, agriculture farmer, by doing farming, I can practice Kriya Yoga. If I am animal farming, I have sheep and goats, cow, horses, so many things. In farming animals, we can practice Kriya Yoga. In short, we can engage ourselves in varieties of activities. Along with that, our nucleus activities should be Kriya Yoga. This is the one education which is called the nucleus education. When you practice it, we are able to practice all. We are practicing Kriya, we will realize we are practicing perfect Islam. We are practicing perfect Christianity. We are practicing perfect Buddhism, Jainism. We are practicing perfectly about teaching of Guru Nanak Dev Ji, teaching of Kabir Sahib. By practicing one, we realize we get everything. Then we should practice. Kriya Yoga practice is given in the same word. What is Kriya Yoga practice? Kriya. Kriya means
any kind of activity, visual or invisible, activity on the platform of idea, thought and concept, imagination, logic, any kind of activity. Try to connect yourself with all activities and try to become one with all activities. That is called the Kriyayoga. And this stage is called Kaivalya. It is very simple, but we can't explain. Only you have to practice and experience by yourself. Result is 100%. There is no academic courses in which you accept, in which we imagine, in which we desire that we are going to get 100%. There is no education on this planet except Kriya Yoga. When you practice Kriya Yoga, we achieve 100% everything. We achieve 100% power, knowledge, peace, joy, immortality, and oneness with all. And practice is so simple, so simple. But when you try to analyze it, you can't practice. Through the practice, you will find analysis automatically appears. We get open vision of intuitive logic. When we get intuitive logic, then step by step you are able to move. Therefore, this is called science. That is very important to understand. Then we get wisdom. After getting intuitive knowledge, if our wisdom is opened, then we feel ever new joy each moment. But when I explain too much, confusion increases. We have more and more confused state. Therefore, I am ready to give you practice. अच्छी तरह से याद रखिए. आइए हम लोग देखें हमें क्या चाहिए जीवन में. आइए होली साइंस. होली साइंस आपको पता है, दिस इज द परफेक्ट. ये कंप्लीट टेक्स्ट बुक है फॉर ऑल सब्जेक्ट. टेक्स्ट बुक ऑफ एकेडमिक्स एंड टेक्स्ट बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जो एकेडमिक कार्यक्रम है पढ़ाई का, उसका भी टेक्स्ट बुक है ये. और जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक वो भी यही है. होली साइंस के ओपनिंग इंट्रोडक्शन में दिया गया है. ओपनिंग इंट्रोडक्शन में दिया गया है, मानव का लक्ष्य है हम अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखें. ऐसा क्यों लक्ष्य है? इसका मतलब कि हमारा अस्तित्व अमर होगा, इटर्नल होगा, तभी तो हम एग्जिस्टेंस बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं. हमारा अस्तित्व ज्ञान में है, इसीलिए हम ज्ञान पाने का प्रयास करते हैं. हमारा अस्तित्व आनंद में है, इसलिए ब्लिस पाने का प्रयास करते हैं. क्रिया का अभ्यास करने से ये तीनों चीजें अपने आप आ जाती है. एग्जिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, पता चलता हम शाश्वत है, इटर्नल है, पता चलता हम ज्ञान रूप है और आनंद रूप है. लेकिन खास बात ये है, अभ्यास करते जाइए. सोचिए मैं जैसे से अभ्यास करेंगे आपको इंट्यूटिव लॉजिक प्रकट होगा. इंट्यूटिव लॉजिक क्या है? क्रमबद्ध अभ्यास. आप किए, इसको कैसे औरों को बताएं कि वो भी करें, इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं. आप अभ्यास करेंगे तो आपको इंट्यूटिव विजडम ओपन हो जाएगी. जब विजडम खुल जाएगा तब जैसे बहुत रास्ता मिल जाता है, अनगिनत रास्ता. ईसाई हम आपको अभ्यास देते हैं, अभ्यास करिए.
देखिए, प्रैक्टिस बहुत आसान है। होली साइंस का सहारा लीजिए। इसमें प्रैक्टिस साधनम प्रोसीजर चैप्टर 3 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि जितने प्रकार की इंद्रियों का परसेप्शन है, जैसे सुनने की क्रिया, देखने की क्रिया, स्वाद की क्रिया, गंध की क्रिया, स्पर्श की क्रिया, प्रत्येक अनुभूतियां परब्रह्म की उपस्थिति है। अगर इसके अलावा कुछ और मानेंगे तो अभ्यास गलत हो गया। हाउ टू प्रैक्टिस? इट इज वेरी इजी इफ यू फॉलो होली साइंस। In this holy science there is chapter 3 procedure. In the chapter 3 what is given? All kind of perception, perception of hearing, perception of various kinds of touch, perception of vision, smell, taste, infinite number of perceptions, except each and every perception is presence of Param Brahma. If each and every perception is presence of Param Brahma, then within each perception, cosmos exists. Suppose that I open my eyes, all these perceptions, I see all of you. Within you, there exists complete cosmos. If I see, this is the mobile, cell phone. Within this, the whole cosmos exists. Within each and every creation, there exist all creations. Within any structure, there exist all structures. This is the truth. How to experience it? It is very easy. Accept only one thing. You are not human being. You are not male. You are not female. Your presence is presence of Param Brahma. With this idea, thought and concept, I have to honor you. I have to serve you. I have to respect you. It is only possible when I accept my own existence, head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs, is presence of Param Brahma. Is within each and every part, there exists all. If you deny it, it means laziness. Try to practice and observe truth behind this. If practice sincerely, you will find the path of truth is lighted. When path of truth is lighted, then they will walk on that very easily. Therefore, never say, this is not truth, and never try to ignore it. Try to practice it, and you realize. Example of Lahari Mahasaya. Last 10 years, he demonstrated he can live without sleep, without breath, without heartbeat, without pulse rate. That is stage of Lahari Mahasaya. Same thing was experienced by Jnanavtar Yukteswar and Paramahansa Yogananda. Take 3 examples, that is sufficient. We have the same structure. Head is up, spine below. Whole structure is the same. Just practice it without doubt. You will find our path is enlightened. Path is glorified. You will see just as some lights are on the path, you will walk on that path. This is very important. अच्छी तरह से याद रखिए। जो आप सुन रहे हैं, आप इसको मान लिए बिना अभ्यास किए तो ये आलस्य है। आप न मानिए तो और बड़ा आलस्य है। तो इसको अभ्यास करते हुए इसको सिद्ध करिए। और कैसे सिद्ध होगा? मान लीजिए हमने अभ्यास किया, हमने पाया कि गलत है, नहीं, हम अभ्यास करते ही हम ऐसी स्टेज पर आए कि अभ्यास शुरू करते ही अभ्यास की प्रेजेंस, उपस्थिति एवर निर्जॉय के रूप में हो। जब अभ्यास की उपस्थिति एवर निर्जॉय के रूप में होगी तब सिद्ध हो जाएगा कि जो हम सुन रहे हैं उसका सही अभ्यास कर रहे हैं। Suppose that we are ready to practice.
We want to prove it. Is it true or not? When we start practicing it, I say, no, I practice. I don't realize anything that represents existence of Parabrahma. I am not realizing it. All right. Try to understand in this way. When you practice, try to practice repeatedly until practice appears bliss. Suppose that I feel right arm. When I feel right arm, I must feel ever new joy, ever new power, ever new peace, immortality. When I feel right arm, then I must have greatest honor, respect to all creation. This is the way how to prove that our practice has reached to its zenith. जैसे हम हाथ को कड़ा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हाथ के कड़ा करने पर, अनुभव करने पर सब बहुत अच्छे दिखाई पड़े, लेकिन ये तो सब भगवान के रूप में है। जो हाथ को कड़ा किया, अनुभव किया, संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाए, परम आनंद, परम शांति की अनुभूति हो जाए, और ऐसा लगने लगे पूरे ब्रह्मांड में केवल परब्रह्म में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ऐसा होता है, ऐसा होगा। बस अभ्यास करते जाइए, हिम्मत ना हारिए। हम लोग एक साथ हैं, हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हिम्मत ना हारिए। हम प्रयास करेंगे, जो हफ्ते में 2 दिन जूम करते हैं, अगर आपकी इच्छा हुई तो हम जूम प्रतिदिन कर सकते हैं, 1 घंटा एक फिक्स टाइम पर, 2 बार कर सकते। कहीं पर इस समय सुबह होगी, कहीं पर रात होगी, कहीं पर दोपहर होगा, कहीं पर कुछ होगा। ऐसा 2 समय हम चुन सकते हैं कि हम 2 बार हम जूम कर सकते हैं। बस इसमें प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस। आंखें हम बंद कर ली। लेट अस क्लोज आवर आईज। आंख बंद रखते हुए अनुभव करें, माथे के सामने, भ्रूमध्य के सामने जो कुछ दिख रहा है, इसको स्वीकार करें। इसी में पूरा ब्रह्मांड है। जब इसको देखने में इतना आनंद आने लगे, कैसा लगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, माथे के सामने दिख रहा है, इस दृश्य को पाकर के पूरी तरह संतुष्ट हैं, तब आपको इस दृश्य में महाअवतार बाबा दिखाई पड़ेंगे, लाहड़ी महर्षि, ज्ञानावतार गिरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, भगवान राम और कृष्ण, सब इसी में दिखाई पड़ेंगे। Keeping eyes closed, increase complete concentration, complete awareness to observe various things we see in the space in front of forehead. In front of forehead, whatever we observe, whatever we see, accept it, presence of Param Brahma. Practice it again and again. By repeated effort of practice, one day we will realize, when eyes are closed, whatever we see in this space in front of forehead, we experience ever new joy. We realize we are fully satisfied. We do not need anything. We received all knowledge, all power, eternal peace and bliss. Just as when you sow this seed, it takes time to get a tree. In the same way, start practicing. Sow the seed of practice of Kriyayoga. One day we will realize, in front of forehead, whatever we see, within there exists all in all. Within you will see deathless great avatar, Mahatma Babaji,
योगातार योगेश्वर लाहड़ी महाशय, ज्ञानातार रिक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब, अब्राहिम, मोसेस, भगवान राम, भगवान कृष्ण. We will see prophets of all ages and land. Within this, not only this, we will experience in this unique form, in this unique vision, there exists all in all. Now open eyes. आँख खोले. आँख खोल करके जो देखते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा, कुछ भी देखेंगे उसी में सब कुछ दिखाई पड़ेगा. चाहे पेड़ देख रहे हो, या पहाड़ देख रहे हो, या नदी या समुद्र, या किसी भी व्यक्ति को देख रहे हो, उस दृश्य में सब कुछ दिखाई पड़ेगा. ये कब होगा? जिसको देख रहे हैं, मान लीजिए परब्रह्म इस रूप में है, उसको ये न कहिए कि मनुष्य है, ये नर है कि नारी है, भूल जाइए. उनकी उम्र क्या है, भूल जाइए. साक्षात परब्रह्म इस रूप में प्रकट हो रहे हैं. इतने सम्मान के साथ, इतने एकाग्रता के साथ स्वीकार करिए. One you will realize when open your eyes, when try to look into any object, a human being, or animal, or plant, or mountain, ocean, lake, river, anything, when try to, with open vision, concentrate on that, you will find within there exists all. We will get it. But how to get it easily? Never try to understand that anything is weak. Never comparison. Stop comparing. Oh, this is called worm. Oh, this is called human being. This is called realized master. Who is greater? Worm, realized master, or human being, or this and that? Forget this comparison. If Parbrahm is manifest in the form of all, stop comparing. Then you will reach to the height through your vision. Within each vision you will find all. तुलना बंद कर दीजिए. एक साइंटिस्ट बनिए. एक एकेडमिक कोर्स है जिसमें तुलना करते हैं. जो दिन की पढ़ाई लिखाई है, स्कूल कॉलेज में कंपैरिजन करते हैं. आइंस्टाइन का प्रिंसिपल में कंपैरिजन करते, रिलेटिविटी. ये क्रिया विज्ञान है, इसमें कंपैरिजन बंद कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा. ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाओं की महिमा अनंत और असीम हो. चाहे नाली का कीड़ा हो, या हम हो, या आप हो, या कोई देवी देवता हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई रियलाइज मास्टर हो, सब किसी का किसी से कंपैरिजन मत करिए. सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, परब्रह्म सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं. जब ये मान करके हम अभ्यास करेंगे, तब ये आपको पता चलेगा प्रत्येक रचना में सब कुछ मिलेगा. और ऐसा करके देखिए, इससे आपको कई चीजें मिलेंगी. एक तो बीमारियां गई, चिंता गई, दिक्कतें गई. पता चला कहीं मसूड़े में दिक्कत, कहीं दांत में दिक्कत, कहीं आंख में, कहीं कान में, कहीं फेफड़े में, कहीं हार्ट में, कहीं हड्डी में. सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं. ऐसा हुआ है. एग्जाम्पल हम आपको देंगे.